Hello friends, welcome to Paralegal Study. In this lecture, we will analysis our third unit, that is alienation, oppression and the freedom. Uh, Before going further in detail, friends, I will just say one important thing, that in our paralegal study channel we have two type of students. Means one group came from the South India, or we can say from the Northeast region, and this particular group of students are familiar with the or comfortable with English language. Means they prefer to listen in English language, and some other students, remaining students, are comfortable to listening the lecture in Hindi language. So we make just try to make a balance between the Hindi and English, and I deliver my lecture in both languages, means Hindi and English, or we can say bilingual method I will follow. And those students who adopt the English medium as the written, when you write the exam of IGNOU or any other exams, you choose the English medium as your written exam. So I request to all of you that please try to familiar with English language while listening any lecture, or while listening any topic. So it's beneficial for you. And in the starting, of course I will explain the things in the Hindi also. Okay, so let's start our unit 3, that is alienation, oppression and the freedom. So friends, what do you mean by alienation? Alienations means separated from the other thing. So what is meant by that? Suppose take an example. Let's a person working in a pencil factory. So a person A, means the name of person, suppose A. So the person A is working in the pencil factory. So A is separated from the object, means subject is who? Subject is a person and pencil is the object. So A is separate from the pencil. Both A and B, means object and subject, are not the same thing. So in this way, alienations means two things are separated from each other. So A working in the pencil factory might be separated from the pencil, and same A person who work is in the factory also separated, also alienated from their co-worker, and the worker also separated or alienated from the factory or production itself. तो these are the stages of the alienation. मतलब सिंपल सी अगर हम बात करें तो मैंने बोला कि एलिनेशन का जो मतलब होता है ना, वो होता है कि किसी चीज़ से सेपरेट होना. मीन्स एक पर्सन है ए, सब्जेक्ट है वो, और वो किसी फैक्ट्री में काम कर रहा है, पेंसिल बनाने के फैक्ट्री में. तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है? पेंसिल. तो ए जो पर्सन है वो अलग है पेंसिल से, और इन द सेम वे हम कह सकते हैं कि ए जो वर्कर है वो अलग है अपने कोवर्कर से भी, तो उनसे भी वो सेपरेट या एलिनेटेड हो गया. और जो प्रोडक्शन होती है फैक्ट्री में, तो उससे भी वो अलग है. कहने का मतलब द ए पर्सन जो है ना, वो एलिनेटेड है किससे? फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, फ्रॉम देयर कोवर्कर्स, फ्रॉम द फैक्ट्री, फ्रॉम द प्रोडक्शन, इन दिस वे. तो ये जस्ट एक सिंपल सा मतलब हुआ एलिनेशन का. ठीक है. और उसके बाद अगर हम देखें कि व्हाट डू यू मीन बाय फेटिसिज्म, तो फेटिसिज्म इज द आइडिया ऑफ द ह्यूमन क्रिएशन विच हैव समवन एक्सेप्ट, और वी कैन से escaped from the human control and achieve the appearance of independence. So what is mean by that? Friends, this concept is given by the Marx, and Marx gave the concept of commodity fetishism. The commodity fetishism means the community remains simple as long as it is tied of its use value. Suppose let's take an example. Means when a piece of wood is converted into the table through the human labor, or we can say through the human force or human labor force, so its use value is clear and its product, the table, remain tied to its material use. So as soon as the emergence as a commodity, it's changed the things into the other thing. So the connection between the wood and the table, and these two, means between these two, a connection is tied with the human labor.
So we can say that fetishism means the ideas of the human creation, means anything which created by the human and somehow have no control over the human. Human control is not there, and the finally product which came after the human creation is appearance in the form of independence. ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि एक लकड़ी है, लकड़ी से अगर आप टेबल बनाते हैं ह्यूमन लेबर की फोर्स से, तो यहाँ पे जो फाइनल में जो अपीयर हुआ है, मीन्स जो टेबल जो बनी है हमें जो क्रिएशन के रूप में जो दिख रहा है, उसकी जो एग्जिस्टेंस है वो बिल्कुल अपीयरेंस टू बी इंडिपेंडेंस, वो बिल्कुल अलग दिखती है और एस्केप्ड फ्रॉम द ह्यूमन कंट्रोल से वो बाहर हमें उसकी जो इम्पोर्टेंस है वो दिखाई देती है। ठीक है, जैसे यहाँ पे सेम अगर बात करें, in the same way fetishism also means that the term capital term is replaced by the feudal lords. Means you all know that in the ancient time, especially in the European society, feudal lords means rich peasants, or we can say big landlords, control over the property, and they also ruled over the state. So over the period of time, this concept of feudal lords is converted into the capital. Now according to the Marx, now in the capitalist society, the capital means the production, or we can say capital or money, controls the other person or labor. So just we can associate it that in the previous time feudal lords had control over the other people and society. Now in the current time, feudal lords is converted into in the form of capital. So capital or money, or we can say big industries control the society. तो यहाँ पे क्या वो बोल रहे हैं कि पहले जहाँ पे फेडरल लॉर्ड्स जो होते थे वो चीज़ों को कंट्रोल करते थे यूरोपियन सोसाइटी में, बट अभी अगर हम बात करें तो कैपिटल जो है, मीन्स जो मनी है, प्रोडक्शन है, बिग जो इंडस्ट्री हाउस है, दे कंट्रोल द सोसाइटी। तो कहने का मतलब जो शिफ्ट ऑफ चेंज हुआ है, जो पहले वो चीज़ हमें लॉर्ड के रूप में या फिर जो टॉप मोस्ट जो हायरार्की में जो लोग होते थे वो हमें कंट्रोल करते थे, बट अभी जो है वो डायरेक्ट वो कॉन्सेप्ट ना रह के इट अपीयर्स इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल और मनी, और वी कैन से इंडस्ट्री। तो इस रूप में आज के दिन अभी लेट्स टेक एन एग्जांपल। सपोज अभी आपने देखा होगा कि यूट्यूब पे आप कुछ भी सर्च करते हैं, है ना, आपने डाला सपोज कुछ भी एनी बॉलीवुड डांस और ओल्ड सॉन्ग्स, है ना, आपने ये यूट्यूब पे डाला, तो क्या होगा, कुछ टाइम बाद आपके सामने वही जो वीडियोस हैं, मीन्स बॉलीवुड सॉन्ग से रिलेटेड, और जो भी आप डालते हैं, जैसे आप फूड आइटम से रिलेटेड सर्च करते हैं तो वही सब चीज़ें आपके सामने, आंखों के सामने आती रहती हैं। सो क्या है ये, इसका मतलब जो टेक्नोलॉजी है वो भी आपको समझती है, आपने जो भी टाइप किया और जो भी आपने वहाँ पे मेंशन किया उसी के अकॉर्डिंग लॉगरिथम जो है वो चेंज हो गया, आपके सामने वही सब चीज़ें वो लाके आगे दिखाती है आपको। तो ये क्या है कि धीरे धीरे अगर हम बात करें तो कैपिटलिज्म जो है, जो इकोनॉमी है, जो बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं इंसान को कंट्रोल कर लिया है। ठीक है, और इसीलिए हमारे सामने जो इतनी सारी चीज़ें जो हैं वो अपीयर होती हैं। ठीक है, और नेक्स्ट अगर हम बात करें कि अभी एक रिलेशनशिप देखें, मीन्स द ह्यूमन काइंड एंड द नेचर। सो द रिलेशनशिप बिटवीन द ह्यूमन काइंड एंड द नेचर ऑल्सो अफेक्ट आफ्टर द इंडस्ट्री रिवॉल्यूशन, और वी कैन से आफ्टर द एडॉप्शन ऑफ द कैपिटलिज्म सोसाइटीज़। क्यों, अभी आप देखो ना कि कैपिटलिस्ट सोसाइटी के बाद क्या हुआ है कि प्रकृति जो है, नेचर, उसको हम एक्सप्लॉइट करते हैं एट मैक्सिमम लेवल, बिकॉज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ कैपिटलिज्म इज़ टू गेन मैक्सिमम प्रिंसिपल, एंड सो they just violate and they just violate the nature as much as possible. दूसरी तरफ अगर हम बात करें कि पहले क्या था, in the ancient time there was a harmony between the nature and the human being, but now in the current time humankind and natures are just like the separate identity, and we can say just look like an example of annihilation. And because of the alienation between the humankind and nature, there is a problematic situation arise in the society in the form of global warming, है ना। तो अभी अगर हम बात करें कि
जो ये एलिनेशन, पहले देखो नेचर जो है उसके साथ इंसान जो है वो बिल्कुल साथ साथ चलता था, ठीक है, लेकिन अभी हम करंट में बात करें तो नेचर और ह्यूमन के बीच एक एलिनेशन, एक सेपरेशन देखने को मिलता है, ठीक है। और उसका रिजल्ट ये हुआ है कि जो ग्लोबल वार्मिंग है और बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स है वो देखने को हमें मिली हैं, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट डू यू मीन बाय ऑब्जेक्टिफिकेशन। ऑब्जेक्टिफिकेशंस मीन्स एन एक्ट और वी कैन से एन इंस्टेंस ऑफ ट्रीटिंग ए पर्सन एज ए ऑब्जेक्ट। आपने देखा होगा सपोज कुछ ऐड या ऐसे मूवीज़ तो होती हैं, इवन आपने यूट्यूब पे भी ये चीज़ें ऑब्जर्व की होंगी, दैट सम पीपल just they just want to getting more and more view. They try to select the images which will be more sexual or which will be more प्लेजर बेस्ड, मतलब कुछ ऐसी वो पिक्चर लगाते हैं जो न्यूडिटी और न्यूड वीडियोस हो सकती हैं, न्यूड पिक्चर हो सकती हैं, और उसमें कुछ ऐसी पोज या कुछ ऐसी तरीके की वो पिक्चर लगाते हैं अपने इस पे चैनल्स पे या जो भी वो वीडियो बना रहे हैं जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें। तो दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी मीन्स you treat the person in the form of object। जैसे ये जो कॉन्सेप्ट है, दिस कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्टिविटी ऑल्सो इमर्ज्ड इन द यूरोप, वेयर ड्यूरिंग द 16 or we can say before the 16th or 17th century, in the European society woman was treated as like a object, and they are just like the part of the pleasure, and that's why their respect is not as much as the male in the European society। तो वहाँ पे वुमेन को एज ऑब्जेक्ट के रूप में, सिर्फ एक प्लेजर के रूप में वुमेन को रखा जाता था। और आप अगर पुरानी वीडियोस पिक्चर देखेंगे जो यूरोपियन सोसाइटी की, तो आपको लगेगा कि वहाँ पे भी क्या है, बहुत सारी आपको जो पिक्चर है, पेंटिंग्स जो है, उसमें वुमेन को एज ए ऑब्जेक्ट के रूप में उसको दिखाया गया है, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिफिकेशंस का ये सिंपल सा मतलब होता है। So overall we can conclude that neither fetishism and nor objectification is identical with the alienation, rather they being synonyms. So overall we can conclude that alienations and fetishism and objectivism, these all three terms are related to each other, or we can say that these are the synonyms, ठीक है। and the basic meaning of alienation is separated from the own identity, or we can say separated from the other thing. This is the basic definition of the alienation. And in the objectification, we already seen that we treat the person in the form of object. So this is also the type of alienation, or we can say this is also the type of separation. So this is objectification. And fetishism means where the things which beyond the control of the human control, and it appears to be, that means the object which is beyond the control of the human object appears to be in the form of independence appearance, है ना। तो अलग जो हम देखते हैं कि जिसके ऊपर ह्यूमन का कंट्रोल नहीं है, उसकी एक अलग ही आइडेंटिटी बन जाती है, ठीक है, और फिर उसकी कीमत भी होती है। जैसे हमने जो एग्जांपल देखा था कि वुड इज़ कन्वर्टेड इनटू टेबल with the help of labor, ठीक है, human labor, but here the table which finally appear after the work of the labor, so table is in the form of fetishism, means it's look completely different from the wood or different from the labor, and a table's appearance is completely independence, है ना। तो बिल्कुल वो भी एक अलग रूप में हमें उसकी इंडिपेंडेंस जो है वो दिखाई देती है। so all these terms are related to the separation, and separation or alienations always lead to be the problem for the society. And according to the Marx, capitalist economic society is the biggest problem for our in the current time, or we can say कि capitalist based economic model is the harmful for the society according to the Marx. Next, view of various thinker of alienation. So first of all, in the Bible also,
we can say when the creation of God means in Bible a story was there that when the creation of God, Adam and Eve disobeyed God and ate the forbidden apple in the Eden garden. So then the alienation from the God happened. अगर मतलब स्टार्टिंग में से बिल्कुल हम उठाएं तो क्रिश्चियंस में बाइबल्स में जिक्र है कि एलियनेशन का मतलब जो सेपरेशन है, जब इंसान स्टार्टिंग में क्या था, ह्यूमन बींग्स आर अटैच विद द गॉड, बट अकॉर्डिंग टू द बाइबल स्टोरी क्या होता है, जो एडम और ईव जो हैं, ये है मेल एंड फीमेल हैं, ये क्या है, इनको ये बोला गया था कि आप कोई भी जो एडन गार्डन है वहाँ से आप एप्पल जो है उसको नहीं तोड़ेंगे, ठीक है, या फिर मतलब ऐसी कोई चीज़ें जो है वो आप नहीं खाएंगे बिना पूछे, ठीक है, गॉड से मतलब एक स्टोरी के रूप में है। बट क्या करते हैं वो, दे डिसोबेड द गॉड एंड एट द फॉरबिडन एप्पल, तो वो एप्पल खा लेते हैं और इन दिस वे देन द एलियनेशन फ्रॉम द गॉड हैपन। तो वहाँ पे पहली बार क्या होता है कि इंसान जो है वो भगवान से अलग हो जाता है। सो दिस इज़ द हिस्टोरिकल फैक्ट रिलेटेड टू द concept of alienation. Similarly, Rousseau also gave the concept of social contract, and according to the Rousseau, ancient society means people of the ancient society live freely, and but after over the period of time, they just make a contract with their representatives in the form of social contract कि भाई पहले क्या था, इंसान जब सोसाइटी स्टेट ये सब नहीं बने थे तो लोग जो हैं वो फ्री थे, वो कहीं पे भी जाके मूव कर सकते थे, कहीं पे भी घूम सकते थे। बट बाद में क्या होता है, एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट होता है बिटवीन द कॉमन पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव। मीन्स ये जो कॉमन पीपल हैं ये कुछ अपने में से ही रिप्रेजेंटेटिव को ये बोलते हैं कि आप हमारे बेस पे रूल करिए और हम बदले में आपको एक तरीके से कुछ अमाउंट ऑफ पैसे या जो भी हम चीज़ें हम देंगे, बस आपको क्या करना है, आपको हम सेफ गार्ड करना है, हमें हमारी रक्षा करनी है। So John Stuart means Rousseau's theory of social contract is also gave the idea about the alienation, that how ancient people separate from their freedom and they adopt the method of social contract which is not up to the रियल फ्रीडम। वो कंप्लीट फ्रीडम के रूप में हम उसको नहीं दे सकते। सोशल कॉन्ट्रैक्ट है तो उसमें हमेशा आपकी जो फ्रीडम है वो कहीं ना कहीं हार्म जो है वो होती है। तो ये रूसो के अकॉर्डिंग है सोशल एलिनेशन का मतलब। नेक्स्ट है कि फॉर हेगल द डेवलपमेंट ऑफ एब्सोल्यूट आइडिया इज अ प्रोसेस ऑफ एलिनेटिंग एंड द डी एलिनेटिंग। मीन्स ही गिव द कॉन्सेप्ट ऑफ डायलेटिक्स। व्हाट डू यू मीन बाय डायलेटिक्स? डायलेटिक्स मीन्स द थीसिस, एंटीथीसिस एंड सिंथेसिस। सपोज वन पर्टिकुलर idea is emerged, this is known as thesis. So for against this particular idea a counter argument will arise which in the form of antithesis, and finally a situation will come when the crux, or we can say the truth, finally arise. This is known as synthesis. तो यहाँ पे क्या है कि जैसे मान लो एक आपने कोई बात बोली तो वो एक कह सकते हो आप थीसिस एक हुई, फिर उसके अगेंस्ट में कोई आर्ग्यूमेंट देना वो है एंटीथीसिस, और उसके बाद क्या होता है एक ऐसी स्टेज आ जाएगी कि इसके कुछ एलिमेंट मीन्स सम एलिमेंट ऑफ द थीसिस, सम एलिमेंट ऑफ द एंटीथीसिस को मिलके जो है एक फाइनली जो कंक्लूजन है या मैं कहूँ जो ट्रू रूप में जो आइडिया इमर्ज्ड होता है उसको फिर बोलते हैं सिंथेसिस। तो सिंथेसिस इज मेनली द आइडिया ऑफ द thesis plus antithesis in the form of complete truth, that is synthesis. So Hegel gave the idea of the alienation and de-alienation, and finally it reached to the higher stage. So the process of alienation and de-alienation makes the process of the growth of the human knowledge according to the Hegel. नेक्स्ट है कि फॉर द कार्ल मार्क्स wrote in his book that is Economics and the Political Manuscript, which is written in the 1844 and published in the 1932. ये जो बुक है वो लिखी तो 1844 में थी बट पब्लिश वो बाद में की गई थी, ठीक है, कुछ टाइम बाद, मतलब अगर 50-60 साल बाद ये जो बुक है पब्लिश हुई थी मार्क्स की, जिसका नाम है मार्क्स इकोनॉमिक्स एंड द पॉलिटिकल मैन्यूस्क्रिप्ट. सो इन दिस राइटिंग मीन्स इन दिस पर्टिकुलर
book, Karl Marx claimed that the capitalist society is the main problem for the alienation of workers, or we can say the alienations problem mainly arise because due to the कैपिटलिस्ट मॉडल ऑफ द इकोनॉमी. ठीक है, तो उन्होंने यही बोला है कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का जो मॉडल है उसी के कारण ये जो हम देखते हैं जो एलिनेशन जो प्रोसेस है वो इमर्स्ड होती है इन द सोसाइटी. सो कार्ल मार्क्स उसका सॉल्यूशन क्या बताते हैं, वो कहते हैं कि कार्ल मार्क्स गिव द कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिज्म. मीन्स अकॉर्डिंग टू द कार्ल मार्क्स alienation can be resolved or alienation can be solved only by replacing capitalism by communism. मीन्स ये जो alienation की जो हमने प्रॉब्लम देखी कि कैसे ह्यूमन जो है वो अलग होता चला जाता है and which always leads to be the conflict with the nature also and with the society also and it is harmful for the freedom also. तो कार्ल मार्क्स ने यही कहा कि जो ये एलिनेशन है ये बहुत गलत चीज़ है और ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के कारण एलिनेशन जो है वो ज़्यादा स्टार्ट हुआ है. तो उन्होंने बोला कि अगर एलिनेशन को हमें ओवरकम करना है, उसको रिमूव करना है, तो द ओनली मेथड इज़ दैट वी अडोप्ट द कम्युनिज्म ओवर द कैपिटलिज्म. मीन्स कम्युनिज्म जो आइडिया है वो हमें अडोप्ट करना होगा. एंड व्हाट यू मीन बाय कम्युनिज्म? कम्युनिज्म मीन्स ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ or we can say all the production related the topics are came under the hand of the government, or we can say communism is also the idea in which the rule is governed by the state is governed by the all peoples. Means there is no higher or upper, or we can say rich or poor people exist in the communism. All people are equal and all peoples work together in the form of collective और cooperative societies के रूप में वो काम करेंगे, मिल के वो काम करेंगे. This is the example of communism. So we see different type of thinkers and their meanings related to the alienations. Next important point is related to the Karl Marx also, that Karl Marx identify the four aspects of alienation. Means first alienation is from the product, and second alienation is from the labor process, and second alienation is from the fellow human being, and in the finally alienation from the human nature itself. जो हमने एग्जांपल लिया था कि the person A is working in the factory which makes the pencil. So person A is separated from the pencil, means object. So we can say this is the first aspect of the alienation according to Karl Marx. Second, alienation from the labor process, means the person A who is engaged in the making of pencil. So the process of making pencil is also different from the A person, individual person. So this is the second aspect of alienation, that is alienation from the labor process. In the third, the person A who is working in the factory of making pencil is separated from the or alienated from the fellow other workers. So this is the third stage, means alienation from the fellow human being. And finally, because the person who is working in the factory is separated or alienated from the production or profit. क्यों? Because profit, all profit goes to the hand, goes to the pocket of the मास्टर और वी कैन से द बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट. तो वहाँ पे क्या है कि उसको बेचारे को बहुत कम चीज़ पैसा ही मिलता है. और उसमें क्या होता है कि वो क्योंकि धीरे धीरे, अब देखो वो पहले क्या हुआ, प्रोडक्ट से अलग हुआ, ठीक है, मीन्स उसकी और प्रोडक्ट की जो बिल्कुल आइडेंटिटी हो अलग हो गई. फिर वो लेबर प्रोसेस से अलग हुआ, फिर इसके अलावा फेलो ह्यूमन बींग जो उसके साथ थी उनसे वो अलग हुआ. और फाइनली एक ऐसी स्टेज आई जिसमें वो खुद की जो आइडेंटिटी है उससे भी वो अलग होके और वो थोड़ा सा अलग तरीके से जीने लगा इन द फॉर्म ऑफ आइसोलेशन. और आइसोलेशन जो फॉर्म है वो विच क्रिएट्स द प्रॉब्लम ऑफ वी कैन से प्रेशर और हाइपरटेंशन और वी कैन से इन द फॉर्म ऑफ नेगेटिविटी. ठीक है, तो उस रूप में वो एलिनेशन जो है, सो ये सब प्रोसेस हैं विच दीज ऑल प्रोसेस गिवन बाय द कार्ल मार्क्स. नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द एरिक फ्रॉम, this was also the prominent thinker in the European society. So Erich Fromm also gave the concept of alienation, and who tried to, means the Erich Fromm tried to
have a marriage link between the Marxism and the psychoanalysis. Means Sigmund Freud give the concept of psychoalienations, or we can say psychoanalysis of the alienation, and Karl Marx give the alienation method of the capitalist economy. So these mean psychological aspect, or we can say the capitalist or प्रोडक्ट रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ द एलिनेशन. सो इनके बीच में जो लिंक बनाने का काम किया है वो किसने किया है? एरिक फ्रोमन ने. एरिक फ्रोमन ने क्या बोला है? उन्होंने कहा है कि फॉर अंडरस्टैंडिंग द बिहेवियर ऑफ द एलिनेशन वी शुड फोकस, आवर फोकस हैज़ टू बी शिफ्ट फ्रॉम द इंडिविजुअल टू द सोशल ग्रुप. इसका मतलब क्या है? उन्होंने कहा कि इफ़ वी अंडरस्टैंड, और इफ़ वी वांट टू अंडरस्टैंड द बेसिक प्रॉब्लम ऑफ द साइकोलॉजी, or we can say that how peoples are alienated from the family or alienated from the society, then this mainly questions arise in the birth of the persons itself. Means if we analysis the birth, और किसी भी चाइल्ड का हम बर्थ और उसके बचपन में अगर जाके देखेंगे तब हम पाएंगे कि उसका इंटरेक्शन कैसा रहा है. कहने का मतलब यहाँ पे ये बात सिंपल सी ये कहना चाह रहे हैं कि जो एरिक फ्रोमन है वो ये बोलते हैं कि हमें अपना जो फोकस है बिहेवियर को समझने के लिए वो इंडिविजुअल से सोशल ग्रुप में शिफ्ट करना होगा. मीन्स सपोज ए पर्सन हु कम्प्लीटली लिव्स इन द आइसोलेशन, मीन्स हु इज़ इंट्रोवर्ट पर्सन. तो अकॉर्डिंग टू द फ्रोमन हमें क्या करना होगा? वी सी द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ दैट पर्सन. तो हमें देखेंगे कि भाई व्हाट आर द वेरियस मेजर इंसिडेंट और वेरियस past memories or evidence, or we can say incidents which makes the person feel isolated or feel completely isolation from the society. तो वहाँ पे हमें उन चीज़ों को समझना होगा, तभी हम इस ये जो एलिनेशन प्रॉब्लम है उसको हम रिजोल्व कर सकते हैं. नेक्स्ट है the other thinker is Herbert Marcuse. So in his book The German Artist Novel, in his work Marcuse makes a distinction between the epic poetry and the novel. Epic poetry deal with the origin and development of the people, and novel does not only focus on the life of the people but also in the sense of longing and the striving. इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये बुक लिखी है, ये द जर्मन आर्टिस्ट नोवेल नाम की जो बुक लिखी है मार्क्यूज ने, उसमें वो क्या करते हैं? वो दे क्लियरली डिस्टिंग्विश बिटवीन द पोइट्री, एपिक पोइट्री एंड द नोवेल. वो इसको एसोसिएट करते हैं, वो इस टर्म को एसोसिएट करते हैं विद द एलिनेशन. वो कहते हैं कि जस्ट लाइक द पोइट्री विच डील विद द ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ द पीपल एंड कल्चर. सो poetry is associated with the development and origin of the people and their culture, and novel जो है which focus on the sense of longing and striving, means कितने समय तक वो चीज़ रहेगी, कितने टाइम पीरियड तक के लिए वो चीज़ रहेगी, उसको वो रिप्रेजेंट करते हैं मार्क्यूस. ठीक है, तो ये अलग से अपना एक व्यू देते हैं, और ये इसमें यही इंडिकेट करते हैं क्या कि द नोवेल इंडिकेट्स दैट एलिनेशन फ्रॉम सोशल लाइफ, कि कैसे जो सोशल लाइफ है, समाज है, उससे कैसे हम अलग हो गए हैं. और सो ये जो लेटर मार्क्यूस आर्ग्यूड दैट कैपिटलिज्म एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन पोज्ड लेबरर सो हार्ड दैट दे बिगेन टू देमसेल्फ एज देन एक्सटेंशन टू द ऑब्जेक्ट दे वर प्रोड्यूस. सो मार्क्यूस ऑल्सो favor the concept of Marx, and according to the Marcuse, the capitalism and the industrializations pushed the labor to live in the isolation. तो यहाँ पे वो स्पेशली इस पॉइंट को भी मेंशन करते हैं कि जो कैपिटलिज्म और इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण ये जो इंसान है वो अलग से रहने पे वो मजबूर हुआ है. ठीक है. And Marcuse gave the solution that the feminist movement and the student movement, which emerged in the Europe in the 1970s, plays an important role to remove the capitalism or to remove the isolation. मीन्स आइसोलेशन को एलिनेशन और आइसोलेशन को अगर रिमूव करना है तो स्टूडेंट्स मूवमेंट एंड द फेमिनिस्ट मूवमेंट, ये सब जो मूवमेंट हैं ये इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकते हैं. और द सिचुएशंस विल कम व्हेन ऑल पीपल्स आर इक्वली
in the form of economy and in the form of social and politically. So वो situation जब आएगी तो वो सबसे best होगी for the enjoyment of freedom. Otherwise in the process of alienation the freedom has no meaning at all according to the Marcuse. Next is from what is problem of alienation. The alienation is the most difficult concept, so we cannot identify exactly, which means according to the different society and according to the different theories and political theory, we can say that the concept of alienation is very complex and different thinker and different theory give the different opinion about the alienation. So हम उसको एक सिर्फ उसमें रूप में बांध के नहीं रख सकते कि एलिनेशन का जो मतलब है वो पर्टिकुलर मार्क्स ने जो बोला वो सही है, या फिर हमने जो देखा हेगल ने जो बोला, रूसो ने जो बोला, ठीक है. तो डिफरेंट थिंकर हैव डिफरेंट ओपिनियन रिलेटेड टू द एलिनेशन, बट वन पॉइंट जो है वो ज़रूर है कि एलिनेशन जो है वो कहीं ना कहीं आपको फ्रीडम के आगे आपको प्रॉब्लम क्रिएट करती है, ठीक है. नेक्स्ट है, सो एक्सटेंट अगर हम बात करें तो डिग्री ऑफ एलिनेशन फेस्ड बाय पीपल इन द डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट और वी कैन से डिफरेंट कॉन्टेक्चुअल. फर्स्ट इज alienated from the society, second alienated in the form of religion alienation, and third is from in the form of capitalist society. So we can say different type of alienation is present, and we cannot summarize or we cannot make one particular statement related to the solution or problem of the alienation. So what is the prognosis? Prognosis means how can we resolve the problem of alienation. So the simple method is according to the Karl Marx and Marcuse. According to the Marcuse, feminist movement and the students movements will be helpful for the removal of the problem of alienation. And according to the Karl Marx, the revolution means the revolution from the working class, which leads to the breakdown of the capitalist economy, and a situation will arise when the all capitalist economy will be collapsed and all peoples became equal and free. सो मार्क्स के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को ख़त्म करना, उसको तबाह करना रिवॉल्यूशन के थ्रू, उसके बाद ही जो प्रॉब्लम है एलिनेशन को इसको रिजोल्व किया जा सकता है. और जो मार्क्यूस है उन्होंने बोला था कि जो मूवमेंट हैं, जो वो फेमिनिस्ट मूवमेंट है, स्टूडेंट मूवमेंट है, उनके थ्रू ही हम इस प्रॉब्लम को रिजोल्व कर सकते हैं. नेक्स्ट अगर यहाँ पे हम बात करें कि एलिनेशन हैज़ टू मीनिंग, मीन्स वन इज़ रिलेटेड टू द ऑपरेशन एंड वन इज़ एस्पेक्ट रिलेटेड टू द फ्रीडम. सो व्हाट इज़ मीन बाय दैट? देखो उसको हम समझते हैं. लेट्स टेक एन एग्जांपल. अकॉर्डिंग टू द गांधी, according to the Gandhi's philosophy or Gandhi's principle, alienation is the very important part to get more freedom. किस रूप में? उन्होंने कहा है कि जो आध्यात्मिक, इवन सेम जो फिलोसफिकल एंगल होता है, जो रिलीजन होता है, उसमें हम क्या कहते हैं कि वी शुड अवे फ्रॉम द गोशिप ऑफ द सोसाइटी, और वी शुड अवे फ्रॉम द सोसाइटी और फैमिली अट्रैक्शन, और वी कैन से अटैचमेंट. तो वो जो फैमिली से, सोसाइटी से, जो अटैचमेंट से बचने की जो बात बोलते हैं हमारे रिलीजन टेक्स्ट में, ठीक है, तो वो क्यों बोलते हैं? बिकॉज इट लीड्स टू बी द फॉर्मेशन और विच इज बेनिफिशियल फॉर द हायर गोल, मीन्स फॉर द सेल्फ रियलाइजेशन. सो एलिनेशन फ्रॉम द सोसाइटी अकॉर्डिंग टू द रिलीजन टेक्स्ट is basically for the self-realization. So purpose of alienation in the religious text is the positive aspect of the freedom. So this is the meaning of the alienation related to the freedom. But according to the Marx, we already discussed in this lecture that alienation from the nature, which leads to the creation of global warming or other problems, and second, alienation from the capitalist, alienation in the form of capitalist society, which is the synonyms of oppression or which is the synonyms of exploitation. ठीक है, तो जो एलिनेशन है, सिंपल सी अगर मैं बात करूं तो मैंने उसके दो मीनिंग आपको बताए हैं. एक एलिनेशन का मतलब है रिलेटेड टू द फ्रीडम,
जो कि रिलीजन टेक्स्ट में जो दी होती है, और वो फ्रीडम क्या है, सेल्फ रियलाइजेशन के लिए, मीन्स फॉर द सेल्फ रियलाइजेशन, फॉर द बेटरमेंट ऑफ द इंडिविजुअल is the best way of the alienation according to the religious text. So according to religion text, alienation is the good. Alienation is good for the freedom or good for the self realization. But apart from the religion text, or we can say apart from the moral philosophy, alienation is associated in the form of exploitation, and alienation is the form of oppression. So this is the meaning of alienation in a positive way and alienation in a negative way. So this is our chapter, and I hope you clear all these things, so you can listen 1 or 2 times and you get a better idea about the chapter. And if you have if you want to get the notes of this particular unit, handwritten notes, then you can send me a message on WhatsApp, and you can send me the mail, and I will provide the handwritten notes at very reasonable cost, means only 10 rupees. So जिसको नोट्स चाहिए, हैंड रिटन नोट्स जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए ज़रूरी हो, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, आपको नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे. ठीक है, टाइम थोड़ा सा उसमें लगेगा, बट डेफिनेटली आई विल प्रोवाइड यू द notes. Thank you so much.